is a story that impacts almost everyone in the national capital, and not just the national capital, but we'll see what happens in other states. Now, what's going to happen is that petrol and diesel will not be provided until you produce the pollution certificate. The Delhi government has decided to make pollution certificates mandatory to buy fuel from October 25. Please keep this date in mind, October 25. Now, the move, the government hopes, will help in reducing air pollution, especially during this winter. Now, Delhi's Environment Minister Gopal Rai has said that the Delhi government will launch 24/7 war room from Monday to combat pollution. This in the run-up to impending winter season in the national capital, where pollution spikes during this time, especially after Diwali. आपने एक ग्रीन वॉर रूम आज एस्टैब्लिश किया है, मेजर इम्प्लीमेंटेशन इसके क्या? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी सर्दियों में प्रदूषण बढ़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 पॉइंट एक्शन प्लान लॉन्च किया है। उन सभी अभियानों के मॉनिटरिंग, नियंत्रण, एनालाइज करने के लिए वार रूम आज से 24/7 शुरू किया जा रहा है। जहाँ तक हमारे नेबरिंग स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और पंजाब है, जहाँ ज़्यादा पराली जलाई जाती है, उसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर टाइम में दिल्ली के एनवायरनमेंट पे होता है। उसके लिए पंजाब में चूँकि हमारी सरकार बन चुकी है, यूपी हरियाणा के साथ भी हम चाहते हैं, केंद्र सरकार को मैंने चिट्ठी भी लिखी है, एक ज्वाइंट मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन पंजाब में हमारी सरकार है तो उनके साथ हमने मीटिंगें शुरू की हैं। पंजाब सरकार ने पहले ये प्लान बनाया था कि किसानों को आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, और उसके लिए उन्होंने प्लान जो था कि पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सहयोग से इस काम को किया जाए। दिल्ली सरकार ने तैयार थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको मना कर दिया कि हम सहयोग नहीं देंगे इसके लिए। आफ्टर दैट अभी कृषि मंत्री से हमने मीटिंग की थी और वो लोग अल्टरनेट प्लान पर काम कर रहे हैं। तो दूसरा, कल आपकी मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि 25 अक्टूबर के बाद बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा दिल्ली में। देखिए, पहली बात तो है कि सरकार ने अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। सरकार के पास बहुत तरह के सुझाव आए हैं। उन सुझावों के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ये काम दिया गया है। पुलिस को काम दिया गया है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट, फूड एंड सप्लाई, सभी डिपार्टमेंट उसको स्टडी कर रहे हैं और उसको लेकर के वर्कआउट कर रहे हैं। आगामी दिनों में इन सभी लोगों की रिपोर्ट आने के बाद जो एक्सपर्ट्स की राय है उनको लेकर के फिर उसके अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ वो रिपोर्ट हम शेयर करेंगे। आफ्टर दैट टेक डिसीजन। See, people are very callous. After even it's been coming in the news, there is no rush at all. Hardly 5%. So people who are offenders are still offenders. They have not moved with this news of notification. See, first of all, we are not enforcers of law, as in we are not inspectors. We can't ask for pollution certificate from a customer before fueling the vehicle. So we spoke with the Minister Saab, Mr. Gopal Rai, and he understood our problems and he had instructed his people. There's a penal provision actually, let me tell you, that if we don't check the PUC certificate before filling a vehicle, we'll be jailed for 5 years. So we are not law enforcers, we are not inspectors. Why should you penalize us? We are just traders. We can help you in checking the PUC certificates, no problem at all. You can deploy your civil defense people, your police, anybody at the pump, they'll do the needful. We are just traders. So, it's the intent is good, but the execution is absolutely flawed. We are expecting that this will be, implemented by October 25th. What do you think will be the situation then, sir? It'll be complete chaos, because in any case at every petrol pump you see there are people fighting over fuel, and this will create a ruckus, and we'll have frequent fights and law and order situation at every petrol pump. So even if they go ahead with this, we would request the police department to deploy a few people of police at all the petrol pumps in Delhi. अभी तो काम डाउन था, बस अभी थोड़ा काम बढ़ा है 1 अक्टूबर से। और मतलब पहले हमारी गाड़ी 30-35 के आसपास होती थी, तो वही 40-45 के आसपास आ रही है। आज ज़्यादा रश है? हाँ, और दिनों के मुकाबले आज थोड़ा ज़्यादा रश है। नहीं मैडम, ठीक है। वैसे अच्छे काम करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। 3 हफ्ते का समय दिया है। हम रोज़ रूटीन में निकलते हैं, तो हमें अपना PUC जो है टाइम से करा लेना चाहिए। अब ऐसे हमारे त्यौहार आ रहे हैं, सर्दी है, सर्दी में वैसे पोल्यूशन नीचे डाउन होता है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का।
बल्कि ये तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट का होगा, शायद मैं कहता हूँ सेंट्रल का भी होना चाहिए। और आप हम सबको जो है पोल्यूशन के बारे में सोचना है। हाँ नहीं ठीक है, स्टेप तो बहुत बढ़िया है जी। और टाइम की बात है तो जैसे लोगों को नहीं पता है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो इसी हिसाब से थोड़ा सा टाइम और दे देना चाहिए। Yeah, it is a phase step because you have to get the laws should be stringent. Unless it is stringent, no one will obey that. So it's a good step by government and everyone should obey it. बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से एक फेयर वो है, डील है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि आगे आगे विंटर्स आ रहे हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, वो हमारे लिए ही हार्मफुल है। तो उसके लिए बहुत अच्छा वो किया है गवर्नमेंट ने कि इसको स्टार्ट किया है। और मैम 3 वीक्स का ही टाइम रह गया है, क्या आपको लगता है कि इतना टाइम सैटिस्फैक्टरी है और शुड गवर्नमेंट एक्सटेंड इट मोर? बिकॉज सिर्फ 9 मैम ये आई थिंक सो सफिशिएंट टाइम है, पब्लिक को थोड़ा सा अपने लिए बनना पड़ेगा ये सब चीज़ें। 3 वीक्स इट्स टू मोर, सफिशिएंट टाइम है, आप लोगों को करना चाहिए, पीपल्स को सोचना चाहिए अपने बारे में। स्टेप तो जरूरी है मैडम, स्टेप तो जरूरी है, बट टाइम थोड़ा देना चाहिए, थोड़ा पहले से अवेयर करना चाहिए कि जल्दी से टाइम से कराएं सब लोग। और कुछ स्टेशंस बहुत कम है, वो स्टेशंस बढ़ा दें पीयूसी चेकिंग के, तो थोड़ा इतना रश नहीं होगा, बट टाइम से ही सब करा पाएंगे। All right, my colleague Ishika joins us for more on this. Ishika, what can you tell us about this entire process? Because the viability of this step is a big challenge because the deadline is very close. How does the government plan on executing this move? So, we did see that Environment Minister Gopal Rai on Saturday, he announced that from October 25th, the PUC certificate will be mandatory in Delhi. That means you won't be able to get a refill of petrol or diesel if you do not have a PUC certificate. Now, government is saying that, this is being done because vehicular emission is also a key contributor to the pollution in Delhi. And if we talk about the people, now the people, despite there being a bit rush, people are welcoming this move. They are saying that, this stringent action was required from the government side. And, maybe, if government increases a bit of, PUC stations, then it will be a better move because according to the data by the Delhi government itself, there are only 950 PUC stations right now in Delhi. Thus, it was speculated that there will be a ruckus here to get their certificates. Now, the dealer association, Delhi Petrol Dealer Association, has a complete different view. They are saying that it was speculated that there will be a ruckus, but if you look at the scene right now, people are being careless. There should be a ruckus right now, but there is not. There's only 5% increase in the people coming for the PUC certificate after the announcement. Now, the Dealer Association also has certain objections to this move because they are saying that there is a penal provision in this very step taken by the government. That means, if these dealers, they provide they refill your car without checking your PUC certificate, they will be jailed for 5 years. Now, if you look at the data by the Delhi government, there are more than 19 lakh vehicles running in Delhi that do not have a PUC certificate. Thus, it becomes very difficult for the dealer association to deal with this. And they have asked for an appointment by the Environment Minister. They are saying that, they are looking forward to the meeting that is going to be held today. And they are hoping that a certain solution will come up because repeatedly they are saying that they are just traders and not law enforcers. If government want to do this, they are going to help government, but they are not going to be law enforcers. Government from their side only, they should, appoint officials who are going to check this. And thus they are saying that, the intention of the government is good, but the execution right now seems to be flawed. Over to you. All right. Thank you, Ishika, for getting us those updates.